with today's session, I would like to invite Mr. Gopakumar Pillai, Placement Recording in Coordinator, progress. Pillai College of Arts, Commerce and Science. Over to you, Gopakumar, sir. Today's session, I would. Thank you, Srividya ma'am. A very good afternoon to everyone. I am Gopakumar Pillai, Assistant Professor and Placement Head of Pillai College of Arts, Commerce and Science. On behalf of the placement team, I warmly welcome our respected guest, Mr. Vinay Raikar, and all my dear students to the webinar scheduled today on making your resume stand out. I would like to take this opportunity to share a few words about our college before proceeding further. Pillai College of Arts, Commerce and Science, New Panvel, was conferred autonomous status by University Grants Commission on 24th of June 2019. The college stands at 7th position in Education World Private Autonomous Colleges State Rankings 2021-22 and has been ranked 31st in Education World India Ranking 2021-22. The college is ISO 9001-2015 certified and is accredited by NAC with the prestigious A grade in all the 3 cycles of accreditation. We are permanently affiliated to the University of Mumbai and recognized by UGC under 2F and 12B. Now, regarding the placement cell, PCACS has been in the forefront of activities, bringing both corporate and companies close to the campus and encouraging them to establish facilities to cater to the needs of both students and faculty. The training and placement cell in the institute plays a pivotal role in counseling and guiding the students for their successful career placement, which is a crucial interface between the stages of completion of academic program of the students and their entry into suitable employment. The placement cell has been constantly putting in efforts to develop necessary skills in students to crack interviews, effectively clear placement drives, and also secure a good career in reputed companies. Today's webinar is also one of these steps to accomplish the said objectives. I take privilege to introduce our chief guest, Dr. Raikar. Give me a minute. Yeah, Mr. Vinay Raikar has been in the field of education and training for nearly 8 years, with a 2-year stint in the IT industry from 2006 to 2008. He graduated in 2005 from SIS College Science with distinction. Thereafter, he cleared CFA, that is Chartered Financial Analyst from United States University. Thereafter, he joined Hexaware Technology as a junior project manager. After that, as an executive director with Roy Eddington Charles and Associates. Right now, he is the founder of Campus Credential, wherein he is engaged in training and consultancy at the postgraduate and professional levels. I warmly welcome you, sir, on behalf of the placement cell. And I'm pretty sure that all the students would be very much benefited by today's webinar, and it will help them, build effective resumes, as the theme goes like making resume stand out. So I leave this platform to Vinay, sir. Students are eagerly waiting to hear from you. So over to you, sir. Thank you, sir. Thank you, Gopakumar, sir. Good afternoon, guys. And I really know that you just been after your lectures, you're there in online virtual session. So I'll keep very clear, very cut, and thanks for the introduction, sir. So the whole introduction now. So before, actually, I just want to tell you about resume and all. I like to tell you about one thing as a brief. As an campus credential, we are into placement and training from last almost 12 to 14 years. And Pillai been one of my oldest client from the engineering perspective point of view, because engineering, we are there with Wilson Pinto, sir. Okay. And it is almost 10 years we went attached now. Lopenday sir is there. We've been attached with that. So we always had 90% plus of placements. So why I'm trying to tell you all this factor is, guys, resume, when we talk about resume, I want to be very pretty clear about those things. That when you talk about resume, I want to know that there's nothing particular format of resume, but there is a taste of the resume people should know about. जब भी आप प्लेसमेंट पे प्रिपेयर करते हो, कहाँ पे भी करते हो, see, understand, when I was applying for IT company in Hexaware, being a BCom guy, understand it,
I'll tell you, I was only first one IT person, like I was only one BCom guy in the whole IT company in the Mahape. Okay. I'd like to share that too also, how I got into. But first, we'll start with the objective why we are here. Okay. So just confirm you're able to see the screen and all, guys. Anyone like from coordinator also can just confirm me up. Are they able to see the screen? Anyone can just put me across. See with them, Yes, sir. Yes, sir. It's visible. Thank you. So, fine. Okay. So it is like I just would like to share one small things about my incident, what happened when I was been in a BCom and all. So probably like around like 14 years back, we don't had like training prison cell or possibly like we don't have any kind of training over. So it is very simple. Like हमारे टाइम में क्या होता था कि I just printed a resume में हमने कहा मैंने नाम लिख दिया and उसके पीछे बहुत बड़ा एड्रेस लिख दिया, बोल्ड में लिख दिया, हायर फॉन्ट पे लिख दिया, जैसे कि ताजमहल का एड्रेस है, एवरीवन नोज अबाउट इट, ठीक है. एंड देन आई गिव अ बिग बॉक्स ऑफ पुटिंग इट अप कि मैंने क्या क्या लाइफ में अचीव किया है. तो 10th का क्या किया है, 11th पे क्या किया है, 12th में मैंने क्या किया, देन लाइक फर्स्ट ईयर में क्या किया है एंड ऑल. सो आई प्रोजेक्टेड ऑल दैट, लाइक ये सब किया बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है. And I just walked through. I'll tell you one thing very clearly: how I got into IT company. Being a BCom guy, I never done any kind of projects on IT. I never done any courses or any certification in IT. Okay, so I was random. I walked random. It was even before the BCom. I'll tell you, it was even before the BCom. In the sense, I just completed exam and I just walked through for my for the company because I was preparing for CAT. I was preparing for CAT parallelly with my second year. I chosen the BCom for the CAT basically. Okay. So even I cleared, I was in IIM Kolkata, I'll tell you. And I cleared a CAT twice in the price. My first CAT was 94, the second was 98.9. Third was 99.2. But still I never got call from IIM Ahmedabad because at that point of time, Ahmedabad had this different criteria, which I was not able to match up in my 12th standard. It was around 80 to 85%, 80% was required and mine was 79.9. So I was rejected for 0.1. Okay. So that is what the journey I started with. And I randomly started, if you know Millionaire Business Park in Gansoli, guys. So I started with the first company. I'll tell you why I'm trying to tell you. I'll come to the point. Okay. It was my best part of my life, I'll tell you. So first was a Mastech company when I entered with my resume, the so-called resume which I prepared. And a Mastech company, it was in left side, the right side, I entered because the right side, when I entered to that company, I asked, वहाँ पे पहले एक वॉचमैन रहता हमेशा, राइट, एक वॉचमैन था जो मुझे क्या है, किधर है, मैं बोला जॉब चाहिए, तो बोलता है अपॉइंटमेंट है, बोला नहीं, रेफरेंस है नहीं, ठीक है, तो तुम निकलो यहाँ से. I was rejected by the first option, like वॉचमैन नहीं रिजेक्ट कर दिया. वैसे ही जाते जाते I started at 9 o'clock my journey. वैसे ही जाते जाते I gone with TEDx and then Caliber Point आ गया, काफी सारी companies I gone through, ठीक है. And one was company like Caliber Point, and that was building number 12. I still remember that. And they told me you are rejected for your voice. I said for voice, मतलब मैं किसके लिए? Then I got to know that it was a call center. Well, I don't know, I rejected for it. ठीक है, तो ऐसे तो टाइम पास करते करते गया. मेरा इंग्लिश माशाल्लाह था, अभी भी है, ठीक है. So the way I said, then I understood, like I was rejected 12 by watchmen and almost 4 by reception people. And till 12 o'clock, I was well experienced people of getting rejected. Okay, I was knowing what are the questions going to come, what is the environment, what they expect from you. Okay, and the last building was exhibit. So I was well experienced till I reached the exhibit company. Okay, and then I understood यहाँ पे क्या बोलते, तो वॉचमैन को देखने का ही नहीं, नजर मिलाओगे तो पूछेगा. So that was the first experience in my life. Then I entered the reception and I did have an appointment. Then I read actually who is the HR and कौन क्या कर रहा है. Okay? And that's the way I started my journey of the first into an IT company and all. I was not even knowing कि मैं IT में काम क्या करने वाला. जब पता चला किसको कुछ नहीं आता, फर्क ही नहीं पड़ता. ठीक है? You just have motivations to start working. You should have a startup. एक start करने की इच्छा होनी चाहिए. That is to push it up. You do just try it up. होता है. बिना try करे ख्याली खुला बनोगे तो नहीं होगा. It's a simple logic. You can do anything, but you start working. You have to understand. Nothing comes free. So you have to take away. आपको जाना पड़ेगा. That's the first step. बाद में बड़ा मोटिवेशन हम लोग
वो डालेंगे कि ये करो वो करो, बट खुद को पुश करना ये पहला बात, ठीक है. So there I really understood when I gone there and I showed my resume and all that, people actually laughed at me. यार ये क्या है, ये कहाँ से उठा के लाया? But fortunately, God gifted, I cleared my interview with my personal, like it was just an interview, कैसा गया उसके ऊपर से मैं clear हो गया था राउंड, ठीक है. रेज्यूमे को से नहीं हो पाया, but then later I really understood by understanding कि रेज्यूमे कितना important है. तो रेज्यूमे is like when if you are not going anywhere, ठीक है, अगर तुम नहीं हो, तुम्हारा रेज्यूमे तुम्हारे सबके बारे में, आपके बारे में ईच एंड एवरीथिंग बोलना चाहिए. इट शुड बी रिफ्लेक्टिंग एवरीथिंग अबाउट यू. नाउ व्हेन आई से रिफ्लेक्टिंग एवरीथिंग अबाउट यू, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू नो, ठीक है. आई विल बी वेरी क्रिपिंग, मैं आपको पीपीटी ज्यादा नहीं दिखाने वाला हूँ, ठीक है. बट यस, माय रिसर्च जहां तक हमने ये किया है, बिकॉज सी व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए, हम लोग भी हमारे एमबीए बच्चों को, कैट बच्चों के लिए जब प्रिपेयर करता है, ठीक है. सीईटी जब भी, क्योंकि मैं जेबी में भी आई रैंक 3 टाइम्स, सो माय फर्स्ट रैंक वाज अराउंड 35, सेकंड वाज 11, द फोर्थ वाज 42, ठीक है. तो जेबी का भी लिया नहीं मैंने, बट देन दोस वर द राइट. तो इवेंचुअली आई विल टेल यू द अप्रोच टुवर्ड्स एन एमबीए इंस्टीट्यूट टू अप्लाइंग फॉर रेज्यूमे, द अप्रोच फॉर, जैसे कि अब मैं इंजीनियरिंग में तो ऑलमोस्ट 50% पीपल आर मोर देन 50% अप्लाई फॉर जीआरई फॉर फॉरेन, ठीक है. तो एक हर एक का अपना अपना अप्रोच होता है. यू लुकिंग फॉर द कंपनी से डिफरेंट अप्रोच. तो यू शुड बी नोइंग कि आगे वाला बंदा कौन है, आगे वाला क्लाइंट क्या है. मतलब अगर बिलबोर्ड एक है, राइट, अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट का बिलबोर्ड है, वो बिलबोर्ड किस हिसाब से बनाया जाता है, वो आगे क्लाइंट के हिसाब से बनाया जाता है. कि सी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन पुट इट अप, बट देन यू हैव टू ओनली रिफ्लेक्ट दोस थिंग्स व्हिच आर रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टारगेट ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू. दैट व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट. आज के तारीख पर रेज्यूमे का मतलब मैं आपको बता दूं क्या है. हर एक बच्चा क्या करता है, गूगल कर लेता है, गूगल इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ यू, ठीक है. तो गूगल कर लेता है, सेम कॉपी पेस्ट कर लेता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंट्री, कुछ भी आपने कॉपी पेस्ट करता है और कैटलॉग और ब्रोशर बना देता है आपका रेज्यूमे का, कलरफुल फोटो, उस पे काफी कुछ आ जाता है, ठीक है. एंड दैट लीड्स टू समथिंग कॉल्ड आउट ऑफ फोकस. जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं वो फोकस ही नहीं होता, वो चीज याद रखो. तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस, आई नो 90% ऑफ पीपल हैव अ सेम कंटेंट. बोरिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए. रेज्यूमे शुड बी योर ओन टेलर मेड, ठीक है. So let's go quickly. What all things I have to do? So basically, what all I want to know. So I already told you about this. कि वो एक एडवर्टाइजमेंट है जहां पे आपके पास क्या स्किल सेट है. देखो यार, मेरे को क्या चाहिए, अगर तुम लोग जॉब के लिए आ रहे हो, तो व्हाट इज द पर्सपेक्टिव. जस्ट थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ना. आप लोग कोई बन जाएगा 2 मिनट के लिए रेज्यूमे, तो क्या पर्सपेक्टिव है. पर्सपेक्टिव ये है कि यार अगर तुम एक खुद एम्प्लॉयर हो, ठीक है, यू आर जस्ट लुकिंग फॉर द पर्सन टू ज्वाइन यू. What are the things you are going to look for? One is the skill set. Majorly is your skill set. Okay. Your thought process. Okay. Do you have any other passion? मतलब देखो अभी आपको बताता हूँ, अगर रणजी ट्रॉफी तुमने खेला है, उससे मेरे को क्या मतलब है. इफ आई एम आईटी कंपनी, तुम रणजी ट्रॉफी खेल के आ, तो मैं क्या करूँ. ऐसा नहीं है. अगर रणजी ट्रॉफी तुमने खेला है या कहाँ पे भी आपने अपने कंट्रीज में या कुछ तो पैशन है किसी भी चीज के लिए, तो मेरे को ये समझ में आता है कि आपने पूरा लाइफ टाइम पास नहीं किया, ठीक है. तो पूरा लाइफ आपने सिर्फ मॉल में घूमे नहीं हो, टाइम पास नहीं किया है, आपने टाइम वेस्ट नहीं किया है, और सब ऐसा मोबाइल में सोने में टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं डाला है. सो इफ यू हैव डन सम पैशन, इफ यू हैव पैशन टुवर्ड म्यूजिक, इफ यू हैव पैशन टुवर्ड एनी डैम शिट, मतलब कहाँ भी आपका पैशन दिखता है ना. अगर तुमने रणजी ट्रॉफी खेला हो तो बंदा ने काफी मेहनत किया टुवर्ड्स रणजी ट्रॉफी. अगर आपने कुछ चेस कॉम्पिटिशन, बिकॉज फ्रॉम चाइल्डहुड आई वाज इन चेस, सो आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन माय चेस कॉम्पिटिशन, द नाइट ऑफ कॉम्पिटिशन आई वन. सो उसका हेल्प मेरे को अभी भी होता है, बिकॉज पीपल थिंक ओके ये वो टाइम से ये अपने आपको एंगेज रखा था. तो वी आर ट्राई टू अंडरस्टैंड यू फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑलरेडी डन. तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ये समझना था ये बंदा पैशनेट है यार, कोई भी चीज को लेके सीरियस है, ठीक है. तो ये चीज आपका रेज्यूमे में रिफ्लेक्ट करना जरूरी है, ना कि द बेसिक थिंग आई पार्टिसिपेटेड इन ड्राइंग कॉम्पिटिशन, ठीक है, आई पार्टिसिपेटेड इन टू दिस इवेंट. अरे यार क्या पकड़ा, आई गॉन विद दिस एग्जीबिशन. क्या मतलब बनता है यार, दैट डजंट गिव मी एनी सेंस कि तू क्या कर रहा है, ठीक है. सो यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन आई टॉक अबाउट अ रेज्यूमे ऑन द फर्स्ट एनालिसिस, आई वांट रियली द टेक अस कि यार ऐसा तुमने क्या किया है और तुम कहां से आ रहे हो, तुम्हारे बारे में वो रेज्यूमे हर एक चीज बोलना चाहिए, ठीक है. सो इट शुड बी मोर अबाउट टारगेट ऑडियंस. ना व्हाट मीन बाय टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस का कहने का मतलब है एक लेवल ऑफ एक रेज्यूमे होता है. पहला बेस रेज्यूमे होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद हर कंपनी के वाइज एक रेज्यूमे बनता है. जैसे कि अगर आपको, मैं मार्केटिंग कंपनी में अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं मेरा मार्केटिंग स्टाइल वाले टेक्निक्स और स्किल सेट में ज्यादा हाईलाइट करूंगा, है ना. इफ आई एम अप्लाइंग फॉर एचआर पर्सपेक्टिव, देन प्रॉब्ली मैं वही चीज को मैं एचआर
मोड पे एचआर टारगेट पे करना चाहूंगा. अगर मैं कोई स्टार्टअप के लिए कर रहा हूँ तो पॉसिबल आई मेक माई रेज्यूमे द स्ट्रेंथ एबिलिटीज एंड ऑल द एक्सपीरियंस लुक लाइक टुवर्ड्स माई गोइंग टुवर्ड्स स्टार्टअप. सो इट इज द वे हाउ यू प्रोजेक्ट द सेम थिंग. मैं झूठ बोलने नहीं बोल रहा. सेम थिंग हाउ कैन यू बी प्रोजेक्ट इन द मल्टीपल लेवल. तो इसके लिए काम करना पड़ेगा बच्चों. फ्री में नहीं होगा, इजीली नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन होगा. इट विल टेक एटलीस्ट अ वीक टाइम टू अंडरस्टैंड. आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, 2-3 ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, रीचेक करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू अपडेट इट, कीप अपडेटिंग योर रिज्यूमे ओवर अ पीरियड, बिकॉज़ दैट इज गोइंग टू हेल्प आउट. ठीक है. व्हाई इनिशियल में क्यों हम लोग ये रखते हैं. ठीक है. सो इट इज लाइक normally other freshers we call a resume and then CV and all, right? So एक बात ध्यान रखो हमेशा कि when we are freshers what all we have to do. तो fresher रहने से क्या होता है कि हमें कुछ ज्यादा you don't have a lot of content, right? Freshers में problem क्या है कि your content is your education, your content is your objective, career objective क्या है, your content is about just a minute guys, मैंने किसी को admit किया है. Okay. Jayesh, you are there, right? Yes, sir, I am. Okay. Sorry, apologies to joining late. Thank you. I'm just waiting for you. Okay, Jayesh is there if something goes wrong with my internet and all. So Jayesh will be there on the back. So thank you, Jayesh. So over here, I just want to tell you about those things about the resume. So normally in a fresher resume and experienced resume make a big difference. Now, the person who has experienced now, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. अब एज ए एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन आई एम चूजिंग द एक्सपीरियंस पर्सन, आई माइट नॉट बी इंटरेस्टेड इन द एजुकेशन. इतना मेरे लिए एजुकेशन मतलब नहीं. मेरे लिए क्या मतलब होगा कि बंदे ने ऑन रोल जॉब में उसने क्या परफॉर्मेंस दिया है, उसने क्या किया. फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केटिंग देखा तो उसने क्या कितना टर्नओवर ऐड ऑन किया, उसे कैसे एक्टिविटीज किया, उसे क्या क्या नए आइडियाज लाए, उसे कैसे किया. तो ऑल दिस थिंग्स आई विल बी मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स. ठीक है. So same way, if I'm looking for other, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ. Let me give you one example. जब भी हम लोग MBA कर रहे थे तो एक कंपनी है मारुति. ठीक है. मारुति सुजुकी सब लोग जानती है. तभी क्या हुआ था कि we had a GD राउंड. तो GD राउंड में कैसे था पता बच्चा कि people are call रहे, मतलब पब्लिक बोल रहा है, काफी लाउडली आंसर दे रहे हैं, बहुत एग्रेसिव होकर लोग आंसर दे रहे हैं. There is one guy, ठीक है, called Santosh. He was very quiet. He just put in his point and he was just little bit introvert. वो थोड़ा quiet था. And out of that, after that, all our GD sessions and over, तो पता चला कि selected was only the Santosh. All of you are rejected. And I was very shocked because people were there were very smart enough, more than Santosh. Then I really understood company क्या देख रहा था. कंपनी को मार्केटिंग के लिए नहीं आया था. कंपनी आया था फिनेंस के लिए आया था. उनको ऐसा कोई बंदा चाहिए था जो वेरी स्किलफुली अलग कैटेगरी के लोग थे. उसमें जितना उनको एग्रेसिव लोग नहीं चाहिए वहां पे. वो एक कंप्लीट, इट वाज मोर अबाउट रिसर्च एनालिस्ट. ठीक है. तो मतलब कहने का आपको ऑब्जेक्ट समझा. कंपनी अपना एक ऑब्जेक्ट लेके आता है कि मेरे को कैसे बंदे चाहिए, उस हिसाब से भी वो आपको सिलेक्ट करता है. तो सेम विद द रिज्यूमे, you have to project your resume in such a way, and that's what I'm going to help you out. Just coming 40 minutes ahead, right? So what I want to tell you is, for the fresher resume, what is important is education is important. You have to highlight properly your education. Okay? If you have a couple of experience with your projects, your internship, you can obviously you should mention it. Okay? With projects also, what all project, which area you have done project. Just writing a one word project doesn't make sense. So basically what area you have done and what is the output and why that is a different than the other people project. So eventually that also matters a lot. Okay? And then you have some kind of technical skills. अभी skills का मतलब ये होता है, किसी को समझो अगर मेरे को CAD आता है, समझो किसी को Excel आता है, PowerPoint आता है, या कुछ अच्छा कोई भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर आता है, या गेमिंग का सॉफ्टवेयर आता है, कुछ भी आता हो, हाईलाइट करो. क्यों मालूम नहीं आगे वाले बंदे को कभी जरूरत पड़े. एक वीडियो एडिटिंग भी अगर आप डालोगे ना आज की तारीख में, ट्रस्ट मी, एटलीस्ट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल बी लुकिंग फॉर दैट, बिकॉज आगे का जनरेशन में देयर आर चेंजेस हैपनिंग. ठीक है. पहले की तरह सिर्फ एजुकेशन और यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. टुडे वी डोंट केयर इफ यू हैव आधार कार्ड, एनीवन कैन यू कैन अप्लाई फॉर अ जॉब. आई विल टेल यू दैट टू आल्सो. आगे जाके चेंजेस होने वाला है. आई विल टेल यू आगे जाके. अभी ऑलरेडी IBM, सेंट्रल,
Cognizant, all these people have started approaching this. They don't care about even the Infy and TCS. I'll tell you all the name who have started this approach. Now what they wanted, just they required Aadhaar card and they will tell you कि ये category. मतलब ये लोग कैसे करेंगे पता है? Bucketing करेंगे. मेरे को marketing, digital marketing के लिए बंदा चाहिए. I don't care about their education. I don't care about where they are. But उनको आता है क्या? That's what they will check for me. ठीक है? If you know, you are in. That's it. So that is the way it's going to be. तो मतलब क्या हुआ? स्किल सेट बेस्ड हो रहा है काफी सारे चीजें एंड आगे ये होने वाला ही है. ठीक है. सो इफ यू नोटिस इन द रेज्यूमे व्हाट वी थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, ये सब हम पहले हाईलाइट करते हैं. लॉजिकली ये बाद में डालो. नेम चाहिए ऑब्वियसली. आई एम टॉकिंग अबाउट एड्रेस. तुम शादीशुदा है नहीं है ऐसे मेरे को क्या मतलब है. तू कहाँ रहता है, मैं तेरे घर पे नहीं आने वाला. ठीक है. सो एनीवे वी आर गोइंग टू मेल यू. कुछ कंपनीज को मैटर करता है आपका एड्रेसेस बिकॉज उनको जैसे कुछ कंपनीज थे उनको लोकल वाले लोग नहीं चाहिए रहते थे, तो वो लोग आपका एड्रेस देख सकते हैं. अदरवाइज वी डोंट केयर अबाउट योर एड्रेस. ठीक है. सो दैट वन थिंग वी हैव टू पीपल अंडरस्टैंड. तो बेसिकली व्हाट ऑल वी हैव टू पुट इट अप इज योर नेम, योर कॉन्टैक्ट नंबर बिकॉज दे हैव टू रीच यू, ऑब्जेक्टिव, योर एजुकेशन, योर प्रोफाइल समरी ऑफ क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या है, टेक्निकल स्किल्स क्या है, एंड देन द एड्रेस. तो एटलीस्ट ये मिनिमम नंबर्स होने चाहिए. ठीक है. जो द पॉइंट्स होने चाहिए. नेक्स्ट थिंग इज it should never be on a resume. ठीक है. So we can go through that. Height नहीं डालो, weight मत डालो. ठीक है. Place of birth, ये सब nonsense है. ये जरूरत ही नहीं है. Don't just go with these things. Just a minute. Sorry. ठीक है. तो आप कौन से religion से हो, कहाँ हो? Until unless there's some like international resume will require couple of things when you're applying for, right? Or like passport number and all. ना यहाँ पे मत डालो. इट नॉट रिक्वायर्ड. से आस्क इवन डिक्लेरेशन, मुंह उठा के डिक्लेरेशन मत दो यार. ठीक. कंपनी लाइक PSU कंपनीज एंड द बिग लाइक गवर्नमेंट कंपनीज दे आस्क डिक्लेरेशन. दे विल आस्क इन देयर फॉर्मेट. देयर यू डोंट हैव टू राइट इट काय डिक्लेयर एवरीथिंग इज अबाउट ट्रू. अगर तू दे रहा है रिज्यूमे में, हम तो एज्यूम करते हो ट्रू ही है. नहीं है तो मत डालो. ठीक है. इवन द वर्ड रिज्यूमे शुड नॉट बी ऑन द टॉप. ठीक है. एंड एनी स्टेटमेंट दैट बिगिन विद आई, माय, अवॉइड इट. नेवर एवर प्लीज अवॉइड दोस थिंग्स. पिक्चर ऑफ योर सेल्फ इट्स योर चॉइस. क्योंकि मैं आपको भी बताता हूँ, मेरे हिसाब से पिक्चर मत डालो, मतलब फोटो मत डालो. बट क्या होता है कि व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू पुट अ फोटो ना गाइस, अभी देख नाउ इट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ ईच एंड इंडिविजुअल. ठीक है. फोटो से क्या होता है कि लॉट ऑफ पीपल हैव अ जजमेंट. आप लोग भी देखते हो ना, आपको किसी का शक्ल देख के आप एक बनाते हो ना आपका व्यू. ये खड़ूस रहेगा, ये अच्छा रहेगा, ये बोरिंग रहेगा, ये सैड है. तो आपने कभी उससे बंदे से बात ही नहीं किया. अगर देखो आप लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हो, ठीक है, बिना मतलब का दूसरे लोगों को गाली देते हो, क्या मोटा है, क्या एटीट्यूड दिखा रहा है. हैव दे आस्क्ड यू एनीथिंग? उसने आपको कुछ छेड़ा क्या, आपको परेशान किया क्या? नहीं. फिर भी हम बिंदास गाली देते हैं. ठीक है. मोटा, घुसरा है, अक्कल नहीं है, बहुत शाना है, शाना बनता है. ठीक है. ऑल दिस थिंग्स वी पुट इट अप, राइट? वी हैव सो मेनी ऑफ स्टूपिड assumption. We talk so many of things which is not necessary. Have you checked it? Just on the appearance. जो वो दिखता है वैसा हम लोग बोलते हैं, और दिखता भी क्या वो अपने हिसाब से, इंडिविजुअल के हिसाब से. ठीक है. सो व्हेन यू टॉक सो मच, उस बंदे ने कभी आपको देखा भी नहीं ना, आपको उसने परेशान भी किया, फिर भी हम उनके बारे में इतना कुछ बोल देते हैं. ठीक है. सो नॉर्मली व्हाट हैपेंड, फोटोज में भी ऐसे ही होता है कि अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो लोग आपके बारे में एक जजमेंट डाल सकते. तो इसलिए फोटोज नॉर्मली अवॉइड करो. रेफरेंस नेम, अंटिल अनलेस दे आस्क यू, डोंट प्रोवाइड अ रेफरेंस नेम. क्यों अपना रेफरेंस नेम दे रहे हो? जरूरत है, they ask to give us 2-3 reference, then only put it up. Religion, caste, definitely मत लिखना कि मैं ये कास्ट से हूँ, मैं वो रिलीजन से हूँ, मैं ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हूँ, मेरा पापा यहाँ से है, मेरे पापा वहां से है. कुछ मतलब नहीं बनेगा. उल्टा डालोगे तो रिजेक्ट जल्दी हो जाओगे. तो डोंट पुट ऑल दोस फैक्टर्स. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. The important aspect of CV they look for. Normally, if you are experienced, work experience. Now, ये डेटा मेरा नहीं है, मैं रात को बैठ के निकाला नहीं. ये डेटा लिंक्डइन में एक हम लोगों ने सर्वे निकाला था, पूरे HR लोगों ने, उसके हिसाब से ये डेटा. ठीक है. सो लाइक वर्क एक्सपीरियंस, रेटेड वर्क एक्सपीरियंस 45% if they have work experience. Obviously, education and skills are very important. Easy to read of your resume should be 101% there. So that is 25% they'll look for, because see, the way you have projected your resume, the way you have showing them, it talks about you. It talks about your discipline. It talks where you're coming from. It talks lot of about you. आप resume भी देते हो ना,
उसमें फॉन्ट क्या आपने यूज किया है, आपने अलाइनमेंट कैसे यूज किया है, आपने उसमें कितना काम किया ना, ये सब चीजें आपका रेज्यूमे उससे बताएगा। ये बात ध्यान रखो। आपका कैसे उसमें क्लैरिटी है, आपका स्पेलिंग एरर है क्या, आपने कुछ सिली मिस्टेक किया है क्या, ये भी आपके बारे में बताएगा वो रेज्यूमे। अनफॉर्चुनेटली ट्रू, ठीक है, माइट नॉट बी इट्स सो एग्जैक्टली हु यू आर, बट यस वो आपके बारे में रिफ्लेक्ट करेगा, विच यू पीपल हैव टू रिमेंबर दैट, ठीक है। The next is like 16% of it and 14% spelling and grammar. Okay. Now, clear objective, keywords added, contact information, personal experience, and computer skills are just 1%, right? I want to tell you one more important thing over here. Let's understand why they reject you. Okay. When asked what they make automatically reject a candidate. So CV with spelling mistake or typo is 61%. So now be serious about it. कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक, टाइपो एरर विल बी थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको, ठीक है। कॉपीड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्ड फ्रॉम द जॉब, मतलब सीधा उठा दिया डाल दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, गूगल का उठा दिया डाल दिया, हमें पता चल जाता है क्योंकि वी हैव सीन सो मेनी पार्ट ऑफ रेज्यूमे। सो इफ यू गिव अस अ रेगुलर काइंड ऑफ रेज्यूमे वी अंडरस्टैंड कि यार ये कॉपी पेस्टेड है, इसका खुद का नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो CV with inappropriate email address, now there are a lot of people who provide email address. एक तो है I got it too. Like I'll tell you, too hot to handle @gmail.com. What? Is it your email address? ठीक है, James Bond 007 Dincha Puja @gmail.com. What crap is this? ठीक है, ईमेल एड्रेस शुड बी रिफ्लेक्टिंग, मैंने पता नहीं कुछ लोग बोल रहे थे कि सर ईमेल एड्रेस में ना इनिशियल दिखना नहीं चाहिए, ये गलत है, ये अफवाह है। प्लीज डोंट फॉलो फेसबुक एंड यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। ईमेल एड्रेस शुड गिव योर नेम एंड योर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, उसमें आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है, ठीक है। आपका ईमेल एड्रेस, मैं आपको अभी भी एक रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपको एक चीज सलाह देता हूं, इट्स योर चॉइस दैट जीमेल में हो सके उतना ईमेल एड्रेस निकालो, नंबर वन। ना मैं जीमेल का कोई भी ऐसा बोलते ना, आई एम नॉट अ पर्सन फ्रॉम अ जीमेल हु एडवर्टाइज जीमेल। आई टेल यू बट व्हाई आई टोल्ड यू, बिकॉज 90% इवन मेरा कैंपस क्रेडेंशियल का भी ईमेल, ऑल द सर्वर इज विद जीमेल गूगल। तो 90% ऑफ योर, कल तुम लोग MBA में अप्लाई करोगे, फॉरेन में अप्लाई करोगे, कहाँ पे भी अप्लाई करोगे, किसी को ईमेल एड्रेस दोगे तो आप पे स्पैम नहीं होना चाहिए मेल, ठीक है। तो जीमेल में क्या होता है कि द मार्केट रेशियो इज हायर कंपेयर टू याहू, रेडिफ एंड ऑल दिस स्टफ। तो व्हाट हैपेंस, स्पैम में कम जाएगा, कहा ना, एक बात ध्यान रखो। तो नॉर्मली हैव अ जीमेल एड्रेस, अगर आपका नाम का नहीं मिल रहा तो मेक श्योर यू हैव सम इनिशियल्स अटैच्ड एंड विद द नंबर्स, कितना हो सकता है उतना छोटा ईमेल एड्रेस लो, ठीक है। देयर इज अ कॉमेडी लाइक माय नेम इज विनय राइकर, राइट। तो मेरे को मिल गया था, मेरे को बहुत पहले, जब भी विनय राइकर @gmail.com मेरा ही है, तो विनय राइकर डॉट विनय भी मेरा ही है। तो विनय राइकर की जितने भी कॉम्बिनेशन है मेरे पास ही, ठीक है। सो हरिहरन सुब्रमण्यम अय्यर करके मेरा दोस्त है, ठीक है। अब उसका पंगा था, उसके नाम इतना बड़ा है कि उसका ईमेल एड्रेस तो मतलब विल बी अ बिग लिस्ट यार। सो व्हाट हैपेंस इज वी थॉट अ लॉट कि उसका ईमेल एड्रेस कैसे बनेगा। सबसे बेस्ट ईमेल एड्रेस तो उसके पास है जो अभी मेरे को याद है, rhari@gmail.com, खत्म, ठीक है। स्वीट, क्लियर एंड अंडरस्टूड की किसका ईमेल है और सबको मालूम रहेगा, ये किसी को बोलूंगा rhari@gmail.com, खत्म हो गई, ठीक है। तो दैट शुड बी द पॉइंट ऑफ इट कि ईमेल एड्रेस जितना छोटा और क्लियर और तुम्हारे नाम पे हो तो उतना बेटर है, ठीक है। सीवी जिसमें लिस्ट स्किल्स बताया नहीं हो 30% है, मोर देन 2 pages लॉन्ग, ऑब्वियसली यू शुड नॉट बी हैविंग 2 pages लॉन्ग। तो अराउंड अनडेकोरेटिव पेपर, कलरफुल पेपर, ब्रोशर पेपर, ये सब अवॉइड करो। इट शुड नॉट बी इन कलर फॉर्मेट, आई विल टेल यू, ठीक है। एंड देन photos 13% है, नॉट मोर, बट देन स्टिल देयर इज चांस ऑफ 13%। इफ यू रियली वांट यू कैन रियली पुट इट अप, डालोगे तो भी अच्छा लगता है कभी कभी, रिस्क एंड इट हैज टू वे, मतलब अच्छा भी है बुरा भी है, तो इट्स ऑल ऑफ यू, ठीक है। एंड बहुत इमेच्योर रेज्यूमे रहेगा तो भी रिजेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो आई रियली वांट यू टू गाइस रीड दिस प्रॉपर्ली, ठीक है। ये मैंने एक सर से दिया हुआ है, मैं आपको जो भी है मैं वो सर का ही बता रहा हूँ जिसने मेरे को सिखाया था, ठीक है। यू जस्ट रीड दिस, the 2 things which I really want you to read. I'll just give a minute for that.
Sir, we lost your voice. यही रे जयेश, मैंने अपने आप को लॉस्ट Okay. I just wanted them to read it. बाकी कुछ नहीं. All right. I think okay. So guys, hey, wait. कहाँ जा रहा भाई? अच्छा. Fine. So ये मैंने एक सर से लिया था, and I liked it at that point of time. So and that matters. This matters a lot. ठीक है. So if you notice, same चीजें हैं, ठीक है. And एक passive में कैसा दिखता है, एक active में कैसा दिखता है, बहुत फर्क पड़ता है. See, I don't want to bore you on this, but then guys literally understand this. People who are on a negative manner, like normally क्या होता है कि हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, एक बहुत नेगेटिव बात करता रहता है, एक पॉजिटिव बात करता रहता है, ठीक है. बहुत लोग होते हैं जो काफी वार्म फील कराते हैं, वार्म वेलकम कराते हैं, वार्म एक काइंड ऑफ एक अच्छा लगता है. इवन अभी जब गोपाल सर आए हैं यहाँ पे, ठीक है, व्हेन ही इंट्रोड्यूस आल्सो, देयर इज अ वार्म इन इट, लाइक वो इंट्रोड्यूस करते वक्त, वो बताते वक्त, ठीक है, उनका फेशियल एक्सप्रेशन एंड ऑल मैटर्स अ लॉट, बिकॉज वो दिखता है यार कि वो मजबूरी में नहीं कर रहा है, ठीक है. वो दिखता है कि गोल क्या है, वो दिखता है कि पर्सन कहाँ से आता है, वेरी कम फ्रॉम, राइट. तो वो एक मैटर करता है, राइट. तो ये छोटा छोटा चीज तुम्हारा लाइफ में ना इतना मैटर करेगा, बिकॉज दैट ऑल एड्स टू योर सक्सेस वैल्यूज, ठीक है, एंड बेसिकली दैट एड्स योर एथिक्स खाना का. तो ये पता चलता है यार बंदा कहाँ से आ रहा है, ये बंदा क्या कैरी कर रहा है अपने पास. कहने का मतलब पता, सी इवन यू ऑल्सो, इफ यू गो टू अ शॉपकीपर, कोई भी एक शॉप पे जाओगे तो वहां पे वो कैसे आपको वेलकम करता है, वो आपको कैसे ट्रीट करता है, वो किस हिसाब से बात करता है, वर्ड यूज द वर्ड्स व्हाट व्हेन ही टॉक टू यू मैटर्स अ लॉट, ठीक है. एंड द सेम एंगल वो वही चीजें दे रहा है, बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ही डोंट टॉक टू यू क्लियरली, ही डोंट कम्युनिकेट टू यू क्लियरली, ही डोंट गिव अ पॉजिटिव वाइब, ही डोंट गिव अ पॉजिटिव वर्ड, लाइक वी टॉक अबाउट पॉजिटिव वाइब. क्या होता है, यही होता है यार कि तुम अंदर से क्या सोचते हो वही बाहर आता है, ठीक है. आप the way you the good thoughts with you, the good ideas with you, the way you treat yourself. See, it's not about your money, I'll tell you. It's not about your degree. It's not about your intelligence. It's not about any materialistic thing. It's about you, how you're able to control yourself. It's about you, how you want to pass the things on your brain. तुम अपने आप से क्या बात करते हो, तो every time what you talk to your brain, because 90% time, 70% I'll tell you, 70 to 90% time you talk more with you than others, ठीक है. वो अपने आप के साथ तुम कितना पॉजिटिवली इन्वॉल्व हो, कितना पॉजिटिवली आप बात करते हो, कितना पॉजिटिवली आप अपने आप को रखते हो, कितना मोटिवेट अपने आप को रखते हो, वही चीजें आपके बाहर रिफ्लेक्ट करेगा, आपका बॉडी लैंग्वेज में रिफ्लेक्ट करेगा, आपके आइडियाज में रिफ्लेक्ट करेगा, आपके बिहेवियर पैटर्न में रिफ्लेक्ट करेगा. जितना आप अंदर से घटिया सोचोगे उतना ही आपका बाहर से भी दिखेगा. यू डोंट हैव टू मेक इट, ठीक है. वो ऑटोमेशन है, दैट्स ऑटोमेशन ऑफ योर बॉडी, इट्स ऑटोमेशन ऑफ योर पर्सन, ठीक है. तो वही चीजें ये सब मैटर करता है, कहाँ ना कहीं छोटा छोटा चीजें इतना मैटर करता है कि यू माइट नॉट नो कि वो कितना बड़ा बना. तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. सी, आई टेल यू व्हाई आई गॉट इनटू व्हेन आई अंडरस्टूड दिस पॉइंट इज long back, like I met Sharad Pawar at once, I'll tell you. I met a couple of more people. Even I met Narayan Murthy on the same. I met Ratan Tata. So I met a lot of big people. Eventually, Jayesh is there with me, right? Even Jayesh sir was there. So Jayesh sir made me met with Modi sir long back when he was CM of Gujarat. ठीक है. So जब भी हम लोग मिलते थे ना, बंदा जब भी आता है, कोई भी ये बंदे जब भी, मतलब जो बड़े लोग हैं, जब भी ये बड़े इंटेलेक्चुअल लोग जब भी आते हैं, तो I should see them when they come, when they talk, when they even speak a word, and the ideas are pretty clear. Their warm feel is different. तो ये समझ में आता है, ठीक है. So that is what matters. And वो कहाँ से आता है? It's not a one day. It's a process. Over a process, how do you treat yourself? So first start treating yourself a good manner so that you're able to give them for others too. So just I'm really sorry I bored you on that, but I really want you people to start approaching, because in the COVID, at least 70, 60 to 70, 80% people are into negative way, negative manner, negative environment. कोई trust environment नहीं है, ठीक है. बहुत फिशी चल रहा है चीजें, बट इसमें बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप, इसमें ये भी लोग हैं जिसने बहुत तरक्की किया, इसमें ये भी लोग हैं जो अभी भी तरक्की कर रहे हैं. दे आर मोटिवेटिंग देयरसेल्फ, दे आर पुटिंग ऑन द राइट ट्रैक. ऑल दिस मैटर्स विद यू. नो अदर पर्सन कैन हेल्प यू इन दिस. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑन दैट वे, ठीक है. सो दोनों में ये फर्क है, ठीक है. फर्स्ट, मैं आई हैड टू कैरी आउट अ सर्वे, मजबूरी दिखा था. दिस इन्वॉल्व्ड मी अगेन
it shows you something called passive. It involved me. I used to keep data. I just finished it. चलो हो गया, ठीक है. यहाँ पे होता है कि मैंने खुद मोटिवेट होके किया, डिवाइस किया, मैंने प्रिपेयर्ड किया उसको, मैंने इंटरव्यूड किया 70 एल्डर पीपल को, मैंने उससे आइडिया मिला, क्रिएट डेटाबेस किया, एनालाइज किया, उसको मैंने इंटरप्ट किया, कंप्लीट किया प्रोजेक्ट विद इन द 3 मतलब स्पेक्युलेटेड टाइम, टारगेट के अंदर मैंने कंप्लीट किया. दैट शोज द अप्रोच with the same kind of work and the approach the earlier. The work happened on the same way, but it matters how you actually reflect them, how you actually show them. That is a point. It's a kind of thin line or of a trust which you can create in the front of other person, because it's a matter of 15 minutes. It's a matter of 10 minutes. You have to take the game with you. Okay? So it really matters what you write on the resume. It really matters how you take on the resume on that. ठीक है. ये जो 3 लाइन गैप अगर आपको पकड़ में आ गया ना, खत्म हो गया. यू कैन वन एनीवेयर, यू कैन गो एनीवेयर, यू कैन फ्लैश इट अप. कुछ फर्क नहीं पड़ता. आप कोई भी आईएम के इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, आप कहाँ पे भी जा सकते हो. यू विल बी नेवर रिजेक्टेड ऑन दैट एरिया इफ यू आर प्रीटी क्लियर विद योर आइडियाज, प्रीटी क्लियर विद योर गोल्स, प्रीटी क्लियर विद योर system and about you, if you're clear with it कि तुमको क्या चाहिए. And second, if you're very much putting up in the positive way, if you're starting preparing in a positive way, trust me, no one can stop you. Trust me on that, no one can stop you. Every people will give a trust and आपको मौका मिलेगा, ठीक है, कहाँ पे भी जाने के लिए. You need an opportunity, you'll get it there. ठीक है. The next thing is, I really want you to have some action words. Like at least take 5 of these words and put on your resume. Even if you can take just a screenshot of it or get a pic of it and all. ठीक है. तो यहाँ पे इनमें से 5 वर्ड तो डालो यार, जो मैंने हाईलाइट किए हैं ब्लू में. एटलीस्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, इवैल्यूएटेड, मैनेज, नेगोशिएटेड, एडवाइस, थॉट, एक्सप्लेन, ऑर्गेनाइज, प्रेजेंटेड, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटेड, क्रिएटेड, सुपरवाइज्ड. इनमें से 5 वर्ड तो डालो, ठीक है. एटलीस्ट यूज 5 वर्ड्स आउट ऑफ दिस बिकॉज दैट विल मैटर अ लॉट. ठीक है. ये आपके रिज्यूमे में आना चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव में आना चाहिए, आपके ओवरऑल कहाँ पे आप लिखते हो, राइटअप लिखते हो, ये वर्ड्स आपके आने चाहिए, which gives you a complete different active voice, kind of a positive way of approaching towards it. ठीक है. Evaluated, promoted, selected and all. So I want you people to take this. ठीक है. So I think I'm clear on this, what I'm trying to tell you on the format. ठीक है. So I told you the base of it. Just let me check. Okay, to the point. So I told you the base of it, what is actually required in the resume. Okay, what is the approach, the emotional content to the resume? What I wanted is the thin line gap, the way you have to put it up, the words you have to put it up, the ideas you have to put it up. Now, next thing I will do pretty clear. Even I'll help you with this. Font, use any of this which I have already mentioned. Okay, 3 में कोई भी 2 font use करो maximum. If you want to be comfortable with 1 font, it's well and good. Font says 11 or 12 in the sense header. अगर आप देखोगे, if you're using 14 as a header, use 11. Or if you're using 16 as a header, use font size 12. Now, this depends on the content, how much you have it. अगर आपका पास content कम है, तो font size बढ़ाओ. अगर content ज़्यादा है, font size कम करो. ठीक है? Use bold or italics. Only few things. सबको bold मत करो यार. मतलब क्या होता है कि उसमें आदमी कुछ मतलब ही नहीं बनेगा. Only bold those things where you want to highlight those things. ठीक है? And obviously no color print. 1 page margin रखो and 1.5 point like spacing रखो when you create it. Deactivate hyperlink because email link है, उसको deactivate करो because वो अलग font पे आएगा, light font पे आएगा और वो underline हो जाएगा, which doesn't अच्छा नहीं लगता. ठीक है. The next is obviously header. I want you to go with your name and जो header होता है ना, मतलब अगर आपका A4 है तो header का जो space है ना, वहां पे आपका जाना चाहिए. आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका नंबर, आपका कॉन्टैक्ट and date of birth is your choice. Again, I'll tell you. Okay, then you have a career objective. Career objective should be about you. It should be very general. Recording in progress. Okay, and then you have following with your academic profile. Now, academic profile is really important for the freshers. That's what I'm going to tell you. The academic profile, it's about your currently what you're doing. Like you're BCom, you're doing on your BA कर रहे हो या आप BSc कर रहे हो. तो अभी तक आपका कितना टोटल परसेंटेज है, या आपका अगर अच्छा परसेंटेज है लाइक 70, 80, 90 ऐसा कुछ है, तो उसको भी यहाँ पे हाईलाइट करके बता दो. एंड देन द HSC एंड द डिप्लोमा और द SSC पार्ट. ठीक है. फॉलोड बाय योर वर्क एक्सपीरियंस, टेक्निकल स्किल्स, इंटर्नशिप. सो वर्क एक्सपीरियंस इज नेक्स्ट थिंग. इफ यू हैव एनीथिंग वर्क एक्सपीरियंस जो हाईलाइटेड बिफोर दैट, टेक्निकल स्किल्स है तो वो हाईलाइट करो. इंटर्नशिप है तो आपको वो दिखाना है. अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, एटलीस्ट मेक 3 बेस्ट अवार्ड्स एंड अचीवमेंट
आपका 10th स्टैंडर्ड तक अगर कुछ आपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया है, अगर स्टेट को रिप्रेजेंट किया, तो डेफिनेटली हाईलाइट करो. एंड देन इंजीनियरिंग में या बीकॉम के 2 वर्ड्स आपने कुछ भी किया है तो वहां पे हाईलाइट करो. इवन इफ यू हैव पार्टिसिपेटेड, प्लीज हाईलाइट इफ यू डोंट हैव एनीथिंग. एंड देन पोजीशन ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, extra activities is really important. Hobbies and interests, and the last is skills. Okay. So let me tell you one thing over here. I'd like to share you a couple of resumes over here. Yeah. Just a minute, guys, so that we can directly go to our points, what we have to discuss. Okay. Jayesh, can you just confirm me once my screen is being shared? Yes, sir, it is visible. Thank you. So this is one kind of resume where I just want to highlight it up. So if you look at the margin and all, so 100% में देखते हैं कैसा दिखता है. So 100% it will be like this. Okay. So let me make it page wise if you want to. That is fair enough. So if you notice, what all things we have done is the name, the email, and the mobile, which I highlighted properly, and the permanent address, college name, and the career. Career objective आप ध्यान से देखोगे, to work towards achieving greater success in my career through hard work, consistency, and the ability to work with others to achieve the organization goal, aims, and objective. So this is very like general kind of it. It's not specific. मैं यहाँ पे कोई कंपनी का नाम नहीं डाल रहा हूँ. देखो क्या होता है पता है? If I write down something like I'm interested in marketing and I'm applying for IT company, तो वो देगा ही नहीं यार. ऑब्जेक्टिव आपका मार्केटिंग बोल रहा है. और मैं वहाँ पे लिख दिया my objective is to get into IIM Ahmedabad and Bangalore and I'm applying for a job. वो बोले यार तुम MBA का ऑब्जेक्टिव रख के इधर आ रहे हो. ठीक है. So you people have to understand the career objective. Actually, if you ask me, it should be changed depending on which company you're applying. Or otherwise, put like me, मैंने जैसा रखा है, generic डाल दो, which goes everywhere. ठीक है. But it should be yours. You are made. Now, next is education qualification. Already have given you कि कैसा दिखेगा आपका hierarchy से आएगा. जो present degree हो पहला आएगा, year of passing. If you want to remove year of passing, your choice, but put it up. And your college, then I have given them sem-wise result because the scores are good. Otherwise, I'll merge it up and मैं एक साथ दिखा दूंगा. Right? And then my skill set, and then my academic projects. Now, academic project I already told you. Just don't describe it within a 1 line or 2 line because many times you have to actually tell them why it is different than others. So the projects you have, the workshop, the achievements, position of responsibility. Now, position of responsibility is one thing which I'll tell you why it is so important. It is something like you are again and again trying to tell them कि boss देखो मेरे पास leadership quality है, मेरे पास कुछ qualities हैं जो मेरे position of responsibility से highlight कर सकते हैं. Because see, if you notice here, what I have written over here is appointed as a member of student council, organizer sports festival. इससे क्या पता होता है कि extra curricular activities में कितना participate करता हूँ. See, यही चीज को मैंने volunteer करके रख दिया तो volunteer कोई इज्जत नहीं है. ठीक है. अगर मैं organizer बन के अगर मैं अच्छा words डाल सकता हूँ तो that makes a difference. Okay? Even extra activities, then the hobbies and the skills. So these are the mandates of. अगर आपने ध्यान से देखा होगा ये रेज्यूमे में, आपका दूसरे रेज्यूमे में आप देखना एक बार, आपका आधा के ऊपर रेज्यूमे, more than half your resume goes only on telling you who you are, that is your name and your address, and you're married or non-married, your description or kind of declaration. इस पे ज्यादा आता है. ठीक है. Languages, you can write it out unless you have, मेरे हिसाब से if you have one extra language, like foreign language है, कुछ extra language है, तो ही लिखो. When you writing it down, then you have to write all the language. For example, if I know French, if I know Spanish, if I know Russian, if I know German, I'll write it one German. But उसके साथ मैं ये भी लिखूंगा कि मराठी, कोंकणी, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा मैं लिखूंगा. तो मेरे को इतना लैंग्वेज आता है. खाली फ्रेंच नहीं लिखूंगा. But by default, you should know Marathi, or by default, you should know 1 or 2 language, regional language. Being in India एक ऐसा country है जहाँ पे more than 1 language आता है. फॉरेन में ऐसा नहीं होता है. ठीक है. यहाँ पे मम्मी का अलग लैंग्वेज, पापा का अलग लैंग्वेज, स्टेट का अलग लैंग्वेज, तो ऐसा होता है. बट देन बाहर ऐसा नहीं होता. बाहर पीपल बहुत सरप्राइज होता है. हाउ डू यू नो सो मच लैंग्वेज? बिकॉज व्हेन इवन आई वाज इन यूएस,
So possibly those were the things when we had a great debate on that. Okay. So that is a 2-page resume which I shared. I'm sharing you 1-page resume, guys, over here. So ये भी आप ध्यान से देखो. I'm just rushing it because we should have a couple of at least the questions with you. So over here you have college logo. Now you have a choice over here कि आप यहाँ पे guys फोटो भी डाल सकते हो इधर. My drawing is not that great, but थोड़ा मैनेज कर लो. ये बाजू में ना यहाँ पे अरे यार क्या है ड्रॉ ठीक है. Over here you can put your photo. ठीक है. यहाँ पे आप पिक डाल सकते हो है ना. तो आपका कॉलेज लोगो यहाँ पे आ जाएगा. यहाँ पे आपका पिक आ जाएगा. परमानेंट एड्रेस बहुत ही एक लाइनर पे चाहिए. You should not write a permanent address like behind this, behind that, go straight, take left. No one is interested. No one is going to come at your home. Just mention it where area and the pin code. That's enough. Okay. Our building name is enough and the area. That's it. So बहुत describe मत करो उसको. And then obviously the way I told you. Then the technical skills top 3, projects internship top 3, academic achievement, extra activities, position of responsibilities, area of professional interest, area of personal interest. That's it. Done. Okay. Now area of personal interest will be hobby, professional interest, which area you're looking for the job, position of responsibility is what you have done to that. तो ये आपका होगा एक individual resume. So एक 1-page resume and then 2-page resume which I shared with you. Okay, you can take a pic of it, and if you want, I'll just even give that the kind of core copy or to your management and to the faculty who can forward to you, something like that if you want to. Okay, so these are the 2 things which I want to reflect it over here: your internship, your academic achievement, your activity, extracurricular activities, the position of responsibilities. But then I'll tell you 3 things. I'll warn you. Never use a color paper. Never have a brochure type it. Never make your look like more creative in that, because I'll tell you the reason behind it. Normally क्या होता है HR को ना बहुत सारे रिज्यूमे होता है, तो उनको पता चाहिए, उनको क्या चाहिए पता है. इट शुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, रीड इट. मेरे लिए इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके ढूंढूंगा कि तूने कहाँ लिखा हुआ है. ठीक है. आई वुड लाइक टू शेयर दैट रिज्यूमे बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट. मेरा एक VIT बच्चे ने किया था. ठीक है. उसने वो बहुत अच्छा है, उसका रिज्यूमे बहुत अच्छा है, बट देन इतना अच्छा है ना, बट वो कुछ काम का नहीं है. वाई इसका काम का नहीं है? बिकॉज उसका रिज्यूमे में आई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कहाँ पे हो. उसका रिज्यूमे इतना कॉम्प्लिकेटेड है. ठीक है. एंड इट इज वेरी इजी टू गेट रिजेक्टेड ऑन दैट रिज्यूमे. ठीक है. सो दैट इज दैट आई विल शेयर विद यू लेटर ऑन. ठीक है. सो ओवर हियर आई वांट टू पुट इन अ नटशेल गाइस what all things I wanted. Your name, your address should be very short in upper head. Your mobile number, email address. Email address, again, I'll tell you, it should be reflecting your identity. ठीक है. आपके बारे में बोलना चाहिए. College logo, and then if anything else you have done, then academic qualification to be clear, technical skills, project internship, achievements, and positional responsibilities, professional interest, and personal interest. That's what we wanted. And 2-page resume I showed you. Follow 2-page resume if it's possible. ठीक है. And where you are at least briefing it up yourself. And again, I told you, depend on which companies, कहाँ पे देख रहे हो, कहाँ जा रहे हो, उसके हिसाब से आपका career objective change करो, आपका overall approach towards resume change करो, and start working for the resume. Take seriously your resume, because if you look at it, should be very neat and clean, a proper format, proper font. ठीक है. Everything matters a lot over here. ठीक है. Over here. So already we are 3:48. I don't want to extend more over here. Otherwise, next session, if you are interested, we can go with your PI rounds. We can go with the aptitude rounds. What we can talk about. A lot of things we can talk about. मैं बात करने लगूंगा तो बहुत time चले जाएगा. ठीक है. Even I'll tell you how I prepared for my CAT and like how it helped me also in my area. How our students are getting help with that too. So there are a lot of things which you have to start preparing too. Okay. But resume is really important, guys, and that's the one thing which will be there with you. That is a certificate, just like Aadhaar card with you. So start preparing. Just don't do copy paste. Research it. Time dalo yaar. Again, Pillai students are very much good with their kind of techniques and artistic and all creativity and all. वहाँ पे आप दिखाओ. The words, the passiveness, the positiveness should be reflected you.
Okay. So over here, I'll go with your question and all. Ma'am, can you help me out? If any student have any query and all, you can just pass on me. So we have 10 minutes, so we can go with that. Yes, sir. I'm just checking here if there is an interest. I'll just ask, sir. Give me 1 minute. Sure, sir. Okay. Let me also give you a couple of other resume too. Let me share with you other resume too, which we had. So also, there's one resume from your college itself. Let me share you that too. Just a minute, guys. Recording stopped. The guys, which I was just trying to tell you. So only you can tell me up. So this is one of the resume of Sumit. It's again from Pillai College of. I just picked up from a couple of Pillai Institute. So this was not that updated, but if you look at it, just written Sumit. That's it. ठीक है. So इससे भी पता है आपको ये एक word से they can derive lot of things from this resume. I'll tell you why. अगर कोई घटिया HR रहा या कोई एक बंदा रहा जो एनालिसिस करने जाए ना, तो ये बोलेगा कि यार ये इसने अपना नाम ऐसे क्यों डाला, बोल्ड में, ठीक है, ऑल लाइक कैपिटल फॉन्ट, ठीक है, और ऐसा क्यों डाला, इसका मतलब इसमें बंदे में एटीट्यूड ज्यादा. might not be, I'll tell you, might not be, ऐसा नहीं भी होगा, वो बंदा बहुत अच्छा है भट्टाचार्य, ठीक है, बट इसके कितने सारे assumption, इसके कितने सारे अलग अलग मीनिंग निकल सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है. तो एक मिड में अगर आप सिर्फ सुमित लिखते हो, वेर यू डोंट राइट भट्टाचार्य, और प्रॉपरली अगर उसको प्रेजेंट नहीं करते हो, तो उसके कितने सारे गलत मीनिंग भी निकल सकते हैं, ठीक है. इफ यू लुक एट अ रेज्यूमे ओवर हियर, इफ यू नोटिस, काफी थोड़ा सा ऊपर पजल लगता है, जबकि उसने किया है काफी व्हाट वी हैव टोल्ड हिम, ठीक है. एंड स्टिल इट इज लाइक लिटिल बिट पीपल हैव टू सर्च ओवर हियर एंड देयर. तो यहाँ पे उतना मेहनत नहीं किया वो दिखता है. तो यही मैं चीज बोल रहा था कि डीएक्टिवेट दिस लिंक्स, ठीक है. अभी इसे live.in में किया है, ठीक है. तो पॉसिबली अवॉइड दिस. आई कांट टेल यू दैट डोंट डू दैट. पॉसिबली अवॉइड इट. Having apart from Gmail, the contact numbers and all should be properly there. यहाँ पे इसने 2 बार अपना ये दिखाया है, ठीक है. The next thing I'll just share with you the उत्कर्ष वाला भी. उत्कर्ष वाला काफी अच्छा है, उसने जो resume बनाया था, and he's a nice guy. Now he's in US too. So he was from my second or third batch in 2014 when we had. So Utkarsh was very famous also in your college at one point. So like उसने competitive programming, internship उसने publish किया था, उसने academic projects किए. तो एवरीवेयर ही हैज प्रॉपर्ली मेंशन्ड उसने क्या क्या किया है. एंड एकेडमिक में भी उसने, ही वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट. तो उसने एकेडमिक में, टेक्निकल स्किल्स में, पोजिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने लिखा, सेमिनार्स, वर्कशॉप, एंड देन लास्ट ही हैड हिज पर्सनल डिटेल्स, ठीक है. सो दिस इज वन काइंड ऑफ रेज्यूमे व्हिच इज प्रोजेक्टेड एंड पुट इट अप इन वेरी वेल, बिकॉज के पास काफी सारे एकेडमिक अचीवमेंट्स है, काफी सारे हाईलाइट करने का ऑब्जेक्ट है. जो इनिशियल्स में होगा वो हाईलाइटिंग में रहेगा. तो यहाँ पे उत्कर्ष में अगर आपने ध्यान से देखा होगा गाइस, तो उसका एकेडमिक अचीवमेंट पहले आता है करियर ऑब्जेक्टिव के बाद, है ना. यहाँ पे आप देखोगे ना, तो उसका एकेडमिक लास्ट पे आ रहा है, बीच मिड पे आ रहा है. बट इट मैटर्स थिंग, बिकॉज इस बंदे ने इतने सारे कुछ किए हुए हैं, इतना ही हैज सो मच ऑफ अचीवमेंट्स ओवर देयर, एंड देयर सो मच ऑफ टेक्निकल पेपर प्रेजेंटेशन ऑल. सो ये होने से क्या हो रहा है कि ही इज ट्राइंग टू हाईलाइट दोस थिंग्स ऑन द इनिशियल पार्ट ऑफ द रेज्यूमे, ठीक है. Even that you can do it. If you have something on that way, that you can do it. The only thing what we want is that it should be very clear, it should be very simple, it should give everything about you, it should talk about your skills, about yourself, about your activities, what you have done, about your passion, it should be talk about you. So that's what really matters. Okay? Ma'am, over to you. Is there any other questions?
Sir, one question one student have written, will HR prefer internship over research project? Anyway, yeah, anyway, if you have done proper internship and all, definitely they will prefer. Nothing like that. It all depends. See, I'll tell you again, there is nothing called A is right or B is right or C is right or D is right. Okay? We have 5 different figures. That way, I'll tell you, every requirement, everything are different. That's the reason when I start with you, I told you one important thing. Karo. Okay, jao. Talk to them. Meet. Because you don't know where is your requirement. See, सबसे अच्छा चीज बता आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा. When I talk to freshers ना, मैं उनको पूछता हूँ कि you have work experience or any experience. They say नहीं हमें कोई experience नहीं. But do you know that when I am able to train new people, possibly you can train 10 standard people. आपको 10 standard के बच्चों को जब मिलते हो, then you have to talk, right? You have a lot of things to talk about it. You can guide them, right? You can help them. You can understand the body language. You can understand what they are going to talk. ये कब बात कर रहे हो? When you have the experience. So it is nothing like experience means a certificate. Experience means the overall experience of your life you have it, and that is only projected when there is a need. ठीक है? तो वो कब आएगा जब वो need है. तो अपने आप को एक अलग अंदाज में मत रखो. You also can put it. You also have the experience. Just that you have to realize it and put on the right thing. That is really important. ठीक है. तो उस हिसाब से सोचो. Go back home and then look at the achievements what you have done over a period. सब फाइलें निकालो. आपको समझाएगा कि आपने क्या क्या किया है. Mark it up, write it up, make it up, and just put it across. That's what we want. बाकी give it, approach it. कुछ भी ऐसा रूल नहीं है कि ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए. No, there's nothing, no rule for that. The only thing we are just helping you to guide you. We're just helping you to just put a layout of it. कैसे जा सकते हैं. ठीक है? Yeah, ma'am. Sir, one more question. If we have passion or experience in photography or teaching or have done some work in any foundation, then should we include all this in our resume? See, if it is getting more than 2 pages, then you have to choose what is the priority. That's number 1. Number 2, again, it depends where you're applying for. Like, for example, if you're applying for any of the teaching perspective job, definitely you have to highlight everything about the teaching initially. And obviously, you can write about the photography. There's nothing wrong in that. Even if you're applying for any of the companies and if you have the photography, do apply. Recording in progress. ठीक है, आप दिखाओ उसमें. दिखाने में कुछ नहीं, because you have to showcase what you're passionate about. But again, I'll tell you, it should not be more than 2 pages resume. It should not be everything. It should not be listed. It should be highlighted. Morely, I'll tell you, suggest you 4 to 5 points. Recording stopped. What is required and what is not, and just highlight those things. Okay. But if you have it, if you have done something about it, if you know about it, if you have done research about it, do mention that. Do mention that, because it shows something about you. It might not they require your photography skills, but at least you understand. Okay, यार, बंदा कहाँ पे तो serious है, कुछ तो कर रहा है. That really matters a lot. ठीक है? Yes, sir. There is no other question. Actually, they need that resume format, or some of them are interested to have the PPT also. Yeah, sure. Sure. And I'll give you a word format of it, and I'll give the highlighted points towards it. Yeah, they need format. Other than that, there is no other question. No, but I hope, ma'am, that helped them. I hope, because I just have a time. I asked the sir also, so I don't want to extend. If they are interested, we can go with the PI question round. The way they have to speak, what are the ideas they have to speak, the approach towards the company or the approach towards the college, what they have to go about it, and how they can prepare for higher education and all. If they're interested, even we can talk on that too also next time. And as they wish, and as per you, ma'am, not a problem. Oh, okay, sir. Yeah. And I hope, ma'am, that helps your student too for preparing for that resume at least today. Yes. Yeah. Now I would like to call Tanvi Joshi for presenting vote of thanks. I would like to thank Mr. Vinay Raikar, sir, for taking out time from his busy schedule and for giving us an excellent presentation, for making this webinar very meaningful and interesting one. Thank you so much, sir, for enlightening us with all the knowledge. I would also like to thank our faculty members for attending this session and giving us their constant support.
Also, I want to extend thanks to all the students in placement cell who really worked hard for organizing this invaluable event. And last but not the least, I would like to thank all the participants for being such a wonderful audience. So on this note, I would like to conclude today's session. Thank you all for attending. Thank you, ma'am. Thank you. Abdullah, Jagridi, can you once again paste it in the YouTube link, the feedback form? Abdullah, Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir, for taking thank you, session. ma'am. Ma'am, and if they require something about higher education, please let me know. We can organize that too. Okay, sir. Thank you. Yeah. Thank you. Bye.